Today I will focus my brief on the evacuation which has been taken by Indian Air Force, as well as the relief and humanitarian aid which has been forwarded, sent to the affected areas. So 3 तारीख और 4 तारीख की रात में जो ये फ्लैश फ्लड कैटास्ट्रॉफिक फ्लैश फ्लड आया, उसके बाद हम अगले दिन से हमारे पास एयरफोर्स के रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए थे, बट बैड वेदर जो होता है, इंक्लीमेंट वेदर की वजह से कोई रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन नॉर्थ सिक्किम में नहीं हो पाया। बाकी पाक्योंग जिले के भीतर तो बाई रोड कनेक्टिविटी था, सारे उसमें हो गए थे, बट नॉर्थ सिक्किम वाज कट ऑफ। उसके लिए हमारी एक एडवांस टीम गई थी, जो हमारे डीआईजी रेंज नॉर्थ एंड ईस्ट ने जिसको लीड किया था, और उन्होंने 1 फुट आधा मतलब पैदल चल के जाना था और आधा बीच में रोड ठीक थी, वहाँ गाड़ियाँ भी थी तो उसके थ्रू कवर होता था। तो लगभग 6-7 घंटे के ट्रैक और वेहिकुलर मूवमेंट के बाद वो पेगोंग पहुँचे थे, और उसके बाद उन्होंने जब ये रूट इस्टेब्लिश किया, इसके बाद हमारी एसडीआरएफ की टीम वहाँ गई, उसके बाद एनडीआरएफ की भी 2 टीम वहाँ भी स्टेशन हो गई हैं वहाँ। इसके अलावा हमें जो लगभग 2 से 3 हज़ार टूरिस्ट के फंसने की आशंका थी वहाँ, जो 2 से 3 हज़ार टूरिस्ट के फंसने की आशंका थी, उसके बेसिस पे भी हमने इवैक्यूएशन का प्लान किया था। उसके लिए एयर फोर्स के शिलोंग हेडक्वार्टर से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा था, और बागडोगरा से भी एयर कॉमोडोर उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और गैंगटॉक में हमारे ग्रुप कैप्टन मिस्टर जेनामनी 3 दिनों से ही हमारे साथ हैं, और उनके और यहाँ आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स, डिप्टी जीओसीज, हमारे डीजीपी, एसीएस होम और अदर ऑफिसर्स के कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोगों ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन एंड इवैक्यूएशन प्लान किया था। आईएमडी से हम लोग कांस्टेंट टच में हैं, दिल्ली ऑफिस से और गैंगटॉक ऑफिस से भी। तो हमें संडे को सूचना मिल गई थी कि मंडे को हमें क्लियर विंडो मिलेगा, इसलिए हमने पहले से ही सारा अपने सॉर्टीज का प्लान कर लिया था, और ग्रुप कैप्टन जेनामनी ने उसको पर्सनली सुपरवाइज किया। और हमारे डिस्पोजल पे 3 MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स थे कल, 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स जिसकी कैपेसिटी और साइज काफ़ी बड़ी है वो भी अवेलेबल थे, और 2 चीता हेलीकॉप्टर और 1 ALH भी हमारे डिस्पोजल पे था। तो कल हम लोगों ने जो इवैक्यूएशन प्लान किया, उसमें कल 514 पैसेंजर्स वेर इवैक्यूएटेड yesterday from Lachen, Lachung, and 1 patient was also evacuated by air. Yesterday we took 59 sorties, and total hours flown were 29.35 hours. The total relief materials which was sent to different locations was 22.31 tons. This includes for the civilians as well as army and ITBP also. And 26 number of foreigners were also evacuated yesterday. 15 belong to Bangladesh, 3 from Russia, 2 from USA, 2 from Sweden and 4 from Nepal. आज की प्रेडिक्शन थी कि आज विंडो क्लियर नहीं मिलेगा, बट फिर भी हम लोग हाई अलर्ट पे थे। बट मॉर्निंग हमें क्लियर विंडो मिला और हमने बहुत सारी सॉर्टीज की। आज भी हमारे पास MI-17 V5 के 2 चॉपर हमने यूज किए, और 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स हमने यूज किए, और चीता भी स्टैंड बाई में था। आज 176 टूरिस्ट जो फंसे हुए थे और लोकल्स भी, उसको हमने इवैक्यूएट किया।
टोटल सॉर्टीज जो आज हुई वो 39 थी और टोटल आवर्स फ्लोन 25 आवर्स का था और आज 35.81 टन्स रिलीफ एंड रेस्क्यू मटेरियल्स हम लोगों ने लाचेन के लिए, लाचुंग के लिए और पेगोंग भी भेजा जो जिसके लिए चुंगथांग जिससे कवर करेंगे वहाँ। आज कोई फॉरेनर्स इवैक्यूएट नहीं है। अभी तक हमने एयर फोर्स के चॉपर्स के माध्यम से 690 टूरिस्ट को इवैक्यूएट किया है। टोटल 98 सॉर्टीज हुए और टोटल 4.35 आवर्स की फ़्लाइट हुई वहाँ। इसके अलावा जो पैसेंजर टूरिस्ट लाचेन और लाचुंग से पाक्योंग, गैंगटॉक और मंगन आए थे, उसमें से हम लोगों ने 1584 टूरिस्ट को एसएनटी के बस से सिलीगुड़ी भेजा है। बाकी कुछ लोग टैक्सी हायर करके भी गए हैं। इसके अलावा जो हमारे फील्ड फॉर्मेशंस हैं पेगोंग से, उनसे जो हमें रिपोर्ट आई है, लगभग 499 पर्सन्स जिसमें टूरिस्ट भी शामिल हैं, वो पेगोंग से ही ग्याथांग और जांगकलांग के थ्रू आके मंगन आके फिर बाई रोड उन्होंने गए हैं। तो कुल मिला के अगर हम जो इवैक्यूएटेड पर्सन्स देखें तो ये लगभग 1200 के आसपास हम लोगों ने इवैक्यूएट किए हैं। अभी कल भी वेदर अच्छी होने की प्रेडिक्शन है। भोलीपनी आमी जो प्रिडिक्शन है कुछ उसमें वेदर राम रही चाहती हैं एंड वी एक्सपेक्ट ए क्लियर विंडो टुमारो एंड डे आफ्टर ऑल्सो इज ए क्लियर विंडो अवेलेबल फॉर अस एज पर दी IMD फोरकास्ट। सो हामीले यो सिचुएशन को पूरा फायदा उठाउने र हामी कोशिश गर्छ कि भोलि र पर्सिसम्ममा सबै टुरिस्ट हामी इवैक्यूएट गर्ने त्यहाँबाट। इसको अलावा देयर इज सम रिपोर्ट्स दैट सम लोकल पर्सन्स आर also stranded at Thangu, so that we are assessing the situation and if weather permits भोलि र पर्सि में हामी थाङ्गुबाट पनि जो हाम्रो लोकल लाचेनपाहरू र अरू मान्छे छ उनीहरूलाई हामी छातेनसम्म ल्याएर उहाँहरूको घरसम्म पुर्याइदिन्छ त्यहाँ। इसको अलावा जो BSNL आज जो खुशी को खबर छ कि चुङथाङ र चुङथाङ को त अहिले कन्फर्मेसन भइगयो। BSNL को अप्टिक फाइबर पुगेर त्यहाँ ल्यान्डलाइन र मोबाइल भोइसको लागि चालू भइसकेको छ त्यहाँ। नाउ यू क्यान टक टु पर्सन्स एट चुङथाङ एंड आज आर्मी और BSNL की ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 VSAT भी कलकत्ता से डिस्पैच हुए हैं एयर के थ्रू ही वहाँ, और वो VSAT हम लाचेन, लाचुंग, चुङथाङ, छातेन और थेंग में इस्टेब्लिश करेंगे। इसके इस्टेब्लिश होते ही हमारा टेलीफोन नेटवर्क इन सब सारे एरियाओं में सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। और इसमें एक सुविधा और जो टेलीकम्युनिकेशन मंत्रालय ने दी है कि इंटर सर्कल जो एक सर्विस के नेटवर्क होंगे, जो अदर सर्विसेज वाले भी उसको फ्री में यूज कर पाएंगे वहाँ। तो ये सुविधा भी है। पावर चुङथाङ में रेस्टोर हो चुका है, लाचुंग में भी रेस्टोर हो चुका है। छातेन में हमारा एक सिक्किम पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का प्लांट था, उसको हम लोगों ने कल जब ये हमारे इवैक्यूएशन के लिए हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे, सो वी हैव सेंड आवर इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस। तो अब हम छातेन का जो SPDC का पावर प्लांट है उसको आइसोलेशन में रन कर रहे हैं, और जो हमें सूचना ये है कि लाचेन में भी और छातेन में बिजली रेस्टोर हो गई है। अभी हमारी बात नहीं हो पाई है डायरेक्ट, तो जो हमारे सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू कम्युनिकेशन चल रहे हैं उससे ये सूचना मिली है। इसके अलावा आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, अभी तक 36 बॉडीज़ रिकवर्ड हुई हैं, जिसमें 10 आर्मी के जवान भी हैं और 79 पर्सन्स अभी मिसिंग अभी भी रिपोर्टेड है वहाँ।
बीच में हमारी मिसिंग की फिगर 160 170 तक जा गई थी, बट अभी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो लेबरर्स थे वो मिसिंग में रिपोर्टेड थे, वो 57 एक बार में ही साउथ सिक्किम से उनको हमने ट्रेस कर लिया है। इसके कारण अब मिसिंग फिगर घट के 79 आ गया है और इंजर्ड पर्सन्स अभी 28 है। अहिलेसम्म जो जानकारी छ कि यो जो भवितव्य लागिराखेको छ जो नेचुरल डिजास्टर छ उसको गर्दाखेरि रोड कम्युनिकेसनहरू सब निकै डिस्टर्ब छ, थुप्रो एरिया अहिले पनि कट अफ छ त्यहाँ। सो यो इम्प्रुभ भएपछि मेबी नवम्बर में सेकेंड वीक को छेउछेउमा हामी फेरि त्यो प्रोग्राम जो छ दलाई लामा होलिनेस दलाई लामाको प्रिचिङ्सको एन्ड टिचिङ्सको र प्रेयर्सको त्यो नवम्बर में अहिलेसम्म टेन्टेटिभ त्यो डेट राखेको छ कि नवम्बर में हुन्छ। सो ये अर्ली वार्निंग से इसमें एक जॉइंट हमारा चल रहा था ऑपरेशन। दिस वाज बीइंग conceived and planned by National Disaster NDMA in collaboration with our SSDMA and Swiss Development Corporation. So the Swiss technology and the Swiss systems were to be installed, for which the in principle approval was obtained from NDMA. And this year in the month of September, from 9th to 18th, no? 9th to 19th, an expedition of 2 expeditions were sent of 14 persons each for Lonak Lake as well as Sakochu Lake, which had representatives from NDMA and Swiss teams. Swiss personals were also there from SDC, and they went and they installed in not EWS but AWS, and that was supposed to give trace the movement, and these were to be monitored by the Swiss agencies, and in consultation NDMA was also to be thing, but unfortunately this which was installed by the joint expedition did not send any advance warning, and most probably it was not working when this incident took place. Still we don't have exact idea of the thing, but this is the presumptions which we are making. Your first question, as of now our focus is on relief, rescue and evacuation of stranded persons. Once the situation normalizes, state government will definitely have a detailed inquiry from a multidisciplinary team consisting of the experts in the field. That will take its own course of time. Regarding explosion, there is no official confirmation about that. There was some, I think, video uploaded in the social media yesterday. But if this explosion was there, this could have been notified, I think, on the fourth morning itself. In our police station as well as the other thing, whatever rudimentary was left after the flash flood, there is no such report. So this is an afterthought, it appears like that. And the explosives are all going through high volume of the water, and such massive explosion through water, when they are traveling through water, it does not appear to be very probable. So but anyway, this angle will also be examined by the expert team of forensic experts and the those who deals with bomb disposal and other things. They can give their opinion at due course of time. No, the thing from state government side, we have already notified an officer with designation and other details in each of the district that whosoever wants to give relief material and other things for the relief camp, they have been requested to go and deposit their material there at the thing which is controlled and managed by the respective district collectors. And they are using these materials as per the requirement,
at the various relief camps which are running in various parts of the state. Now these individual things which you are doing, some might be genuine, some might be, I think, taking advantage of the situation also. So our state police will look into this and take necessary measures that those who are without any authorization, they are not allowed to collect donation in the name of relief and rescue. How do you segregate them? No, we have already authorized that they have to give to the district collector notified relief collection material. Others who have not taken permission, they are all illegal, they will be taken necessary action as per the law. NH10, the status is that we all know up till Tista it is open, between Rangpo and Malli it is one way. If you want the exact location, but it may take some time, you can discuss with me separately. We expect that in next 10 days at least one way, single way traffic will be there on the national highway. The main area of concern is the point between 25 and 28 kilometer. It is Rabi Khola or Gel Khola, whatever they call. That West Bengal has now handed over that restoration to NHIDCL, and NHIDCL has moved their men and machinery to restore. Yesterday I had a meeting with Ministry of Road Transport officials. They were here, and I think mostly by within a week's time that portion will also be operational. The news which we have, the status report which we have got, that many of the stretches are open for single way traffic with little bit of protection, but it may take some time for full restoration of the thing. That's why for carrying our essential commodities and other thing, as I have told earlier, we are taking the long route via Lava, and for the essential commodities, whatever the trucks and vehicles are being requisitioned through our transport department, as well those who are having their own vehicles, we are giving some subsidy to them so that there is no increase in the prices of the essential commodities, vegetables, medicines, gas and POL materials. Water level has not increased. There have been 2-3, I think, rumors floating in between that Sakhochu is also going to burst, then again Lonak is again going to burst. But the advanced posts which are there from ITBP and Army, they have not given any such indication. अहिले गभर्मेंट अफ इन्डियाले इन्टरमिनिस्ट्रियल सेन्ट्रल टिम नियुक्त गरेको छ त्यहाँ उहाँहरू अस्ति रातितिर ग्याङटक पुग्ने भए त्यहाँ हिजो हाम्रो एन्ट्री कन्फरेन्स भयो र हामीले एरिया अफ कन्सर्न जो छ त्यहाँ त्यो हामीले उहाँहरूलाई जनाएको र उहाँहरूले हिजो रङपो आइबिएम गोलीटार सिङताम दिक्चुसम्म उहाँहरूले भ्रमण गर्नुभयो आज मङ्गन नर्थको पनि जहाँसम्म फुटमा हुनसक्छ फुटमा जानुहुन्छ र अलिकति एरियल सर्वे पनि हामी उहाँहरूले गराउने कि टु हेभ दि बेसिक आइडिया अफ द थिङ. This inter-ministerial central team will only recommend for temporary restoration. अब if you see the NDRF जो disasters को guidelines हुन्छ त्यहाँ उसमें there are two types of thing. One is the immediate and temporary restoration. So temporary restoration को लागि they will recommend, but the scale of sanction is very limited. So in that we can't do much. So to overcome this, we had one meeting yesterday with the National Crisis Management Committee, which is headed by Cabinet Secretary and all concerned departments are member in it. I had requested for relaxing in the guidelines because we cannot go on temporary connectivity. So we require at least semi-permanent restoration of our bridges and other thing in the civilian as well as in the forward areas so that daily communication is not hampered. And the Government of India and Cabinet Secretary has already passed orders for construction, the temporary reconstruction of belly suspension bridges
at 7-8 locations which we have indicated to them, and this will be taken up by the BRO as well as the Army Engineering Corps to expedite the thing, so that at least within a month or 2 months the belly suspension bridge are launched. Right now, as a measure of abundant precautions, all the schools and colleges in the Sikkim were closed. But except for the thing where the schools will not be operational because of the slushing or the mud which has been accumulated there, we will like to start the schools and colleges in other areas. For them, ACS Education is here. He is making an assessment of the things, and necessary directions will be issued in due course of time. The Lachung, there is full connectivity between Chungthang and Lachung. All the roads are open, there is no damage, vehicles are plying on that, there is no issue. The area of concern is between Chungthang and Lachen. And our team, because it is a BRO road, our team of BRO officials are trying to assess the damage. Once that damage is thoroughly assessed, then we will get back to you. Our first priority is to restore the connectivity between Gangtok up till Chungthang. Director General Border Road Organization himself was here, and a joint survey of a joint meeting was conducted where the DG BRO and his team of senior officials were there, and they had suggested a new alignment between Tung and Naga, and Honorable Chief Minister was kind enough to accompany the team and to try to convince the people from Tung and Naga to make their land available for construction of this highway, this road. And the good news is that we have received the NOC from the people in the area, and the work has already started. We will have a motorable road, not very smooth and fine, up till Chungthang, and within a month or two we will be able to launch a belly suspension bridge which can take a load of 8 to 10 tons, I think within 2 months' time. The belly bridges, I said, for semi-permanent restoration. So the thing I got diverted there. Once is temporary restoration, which the IMCT team will assess and recommend their thing to Ministry of Home Affairs. Then we are preparing a memorandum which will be submitted to the Prime Minister and Home Ministry, Home Minister also, regarding additional and special central assistance and package for Sikkim, which may take time, because if we have to construct a RCC bridge or a steel bridge, it will take minimum 2 years plus. So we cannot just lie idle and wait for the permanent construction to take place. So our immediate priority is to have a semi-permanent restoration through belly suspension bridges, and side by side permanent restoration will also take place. But it will be a long drawn process. So we want to restore the connectivity, normalcy we want to be brought as soon as possible. आज देखी अब जसको हाम्रो आफ्नो सिक्किमको मान्छेहरू थियो उहाँहरूको जो अब भोटर लिस्ट निकाल्नु सकेन हतारमा या केही अरू डकुमेन्टहरू निकाल्नु सकेको थिएन उहाँहरूको लागि अलरेडी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरले भोटर लिस्ट बनाउनुको स्पेशल क्याम्प आजदेखि काम गर्नु सुरु भयो त्यहाँ। अब जो अनक्लेम्ड बडीज छ जस्तो कुरा यहाँ आउँदै थियो कि लगभग 40 भन्दा बेसी बडी रिकभर भएको छ वेस्ट बेङ्गलको जलपाइगुडी जिल्लामा। उसमा हामीले त्यो जो सिस्टम हामीले इस्टाब्लिश गरेको छ कि वेस्ट बेङ्गलबाट जो हाम्रोमा डिटेल्स आउँदैछ, फोटोग्राफ्स आउँदैछ, द्याट इज बिङ सेन्ड टु अल द पुलिस स्टेशन्स। त्यहाँबाट हामी भेरिफाई गराउँदैछ र सोशल मिडियाहरूमा पनि त्यो सब डिटेल जाँदैछ।
उसमें अहिलेसम्म 12 बॉडी आइडेन्टिफाई भइसकेको छ, जसमा 10वटा बॉडी आर्मीको जवानहरू थियो जो शहीद हुनुभए वहाँ, र 2वटा बॉडी हाम्रो सिक्किमको थियो। बाँकीको पनि हामी सर्कुलेसन र अहिले सर्च जारी छ त्यहाँ। बाँकी अब जसको सिक्किमको भित्र पनि अगर बॉडी जो आएको छ जो आइडेन्टिफाइड छैन त्यहाँ, विल ट्राई टू कन्ट्याक्ट द कन्ट्र्याक्ट लेबर्स जसको थ्रु या जुन कम्पनीमा उनीहरू काम गर्दै थियो, इफ समबडी आइडेन्टिफाइज देम, उसको ड्यू आइडेन्टिफिकेसन गरेर उसको नेसेसरी जो प्रोसिजर्स छ हामी कम्प्लिट गर्छ त्यहाँ। अब यो सब अहिले स्पेकुलेसन मात्रै चल्दैछ त्यहाँ। जो बादल फाट्यो, क्लाउड बस्ट भयो या तपाईको लेक फाट्यो, अब उसको साइन्टिफिक भेरिफिकेसन गर्नुको लागि अब एक्सपर्टहरू आउनुहुन्छ। एनडिएमएको टिम पनि छिटै उसको विषयमा आएर त्यहाँ खोजबिन गर्छ उहाँहरू त्यहाँ। हाम्रो जो डिपार्टमेन्ट अफ साइन्स टेक्नोलोजीको जो प्रिलिमिनरी एसेसमेन्ट छ विच दे हेभ गिभन कि लोनाक लेकको माथि एउटा मोरेन, मतलब मोरेन थियो त्यहाँ। मोरेनको एउटा निकै ठुलो हिस्सा जो 660 मीटर, नंबर्स में भी लिटिल बिट वेरी, 660 मीटर बाई 225 मीटर इंटू 25 मीटर को डाइमेंशन को थियो। त्यो 3 तारिकसम्म पहिला थियो। 5 तारिक जब यो दोबारा उसको सैटेलाइट इमेजिनरी एक्जामिन भयो, उनीहरूले मेजरमेन्टको साथमै दिएको छ त्यहाँ। त्यो मोरेन छैन र जो साउथ पार्ट अफ जो लोनाक लेक छ उसमें डीप पन्डिङ भएर एउटा ड्यामिङ जस्तो भइराखेको छ त्यहाँ। सो द प्रिलिमिनरी कन्क्लुजन अफ द साइन्स टेक्नोलोजी इज कि मोरेन भयो र साथमा त्यो दिन क्लाउड बस्ट पनि भयो। यो कम्बाइन्ड एफर्टले गर्दाखेरि, बट दिस इज अल प्रिलिमिनरी एसेसमेन्ट। यसको डिटेल्ड जानकारी जब हाम्रो सब्जेक्ट एक्सपर्टहरूले यसमा डीप स्टडी गरेर then they can give us the actual position, then only we will be able to comment. These are the some preliminary assessment made by our Department of Science and Technology. This is totally baseless and unfounded statement moving in the bazaar there. जिस दिन ये डिजास्टर हुआ 3 की और 4 की रात के बीच में, उसी दिन शाम 5 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी, जो एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं, उसमें आर्मी, एयरफोर्स, जितने मेजर डिपार्टमेंट जो डिजास्टर से कंसर्न्ड होते हैं सभी प्रेजेंट होते हैं। उनकी मीटिंग हुई और हमारे स्टेट की तरफ से मैंने एक प्रेजेंटेशन किया बिफोर द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, और हमारे यहाँ से भी सारे सीनियर ऑफिसर्स उसमें उपस्थित थे, इंक्लूडिंग आर्मी, आईटीबीपी और सभी फोर्सेस के भी लोग थे। और हमने जो जो रिक्वेस्ट वहाँ से मांगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तत्काल उसको पूरा किया है। और 4 तारीख को मीटिंग हुई और 5 तारीख की सुबह से एयरफोर्स की अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो भी हमारे पास ये ईस्टर्न सेक्टर में अवेलेबल है, इट इज़ एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अभी तक केवल MI-17 चलती थी, अब MI-17 की एडवांस जो सिस्टम है V5 अवेलेबल हैं। चिनूक्स जो अभी लेटेस्ट एक्विजिशन है इंडियन एयरफोर्स के, लगभग 8-10 महीने 1 साल पहले आए, वो भी हमारे डिस्पोजल पे 3 चिनूक्स हैं अभी वहाँ। सिमिलरली NDRF की टीम भी भेजी गई हैं। जो हम लोगों ने सैटेलाइट फ़ोन्स वगैरह मांगे थे वो भी अवेलेबल कराए गए हैं। रेस्टोरेशन के लिए उन्होंने सारी जो हाईएस्ट जो ऑफिशियल्स होते हैं सारे आ चुके हैं। डायरेक्टर जनरल BRO आ चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ चुके हैं, मॉर्थ के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के सीनियर ऑफिसर्स आ चुके हैं। डेली VC होती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। ऑल एफर्ट्स आर बीइंग मेड। So I don't agree कि government of India has not provided support to us. We have
received the advance installment of the SDRF fund also, which is good enough for meeting the temporary requirement or immediate requirement of the state government. और जैसे हम डिमांड करेंगे वो सब पैसे के लिए कोई उसमें कोताही नहीं होगी, ये भी हुआ है। अभी उसमें और सारे मटेरियल सामान आने वाले हैं। सो दिस इज टोटली बेसलेस। फर्स्ट क्वेश्चन, yes, I have written to Chairman of ISRO as well as the Director of NISAC to watch the satellite imagery of Lonak, Sakochu and other lakes in our hills and analyze those images, and if something which requires immediate attention, that should be shared with us, and we are receiving regular update from them. Regarding the not functioning of the advance warning system, this has already been intimated to NDMA long time back after the thing, and the technical thing about AWS and EWS I am not fully aware, so I will not like to comment on that. This is a theoretical question. I am not competent to answer whether if the information was maybe a 1 day or 2 day in advance, at least the human lives would have been saved. But I don't know whether it could give such advance warning in beforehand 2-3 days that something is going to happen. That's I said, once the situation normalizes, an assessment will be made. For sure we know that the there is no dam anymore. The dam has been dammed basically. And there is, I think, water and all those things in the powerhouse also. So the concerned maybe technical personnel, once they assess the situation, then only we will know the exact situation. But it is not immediately that it will be operational or functional. All power plants within Sikkim, Sneha, Karnatic, stage 5 are shut down. They are assessing their damages. But they will be operational soon. They don't have major damages there. Everyone is claiming insurance there. It is not a human, because Lonak is in such a place where there is no habitation. So that because human habitation or settlement or other thing, if the damage was there, then it could be attributed to someone. But it is at a remote, inaccessible location. So it is, I think, providence, and we can say an act of God. Regarding army side, I will like to add something. As lot of arms and ammunitions are floating in the thing, army has started a combing operation to finding out all these arms and ammunitions which have been washed out. So they are trying to find out and recovering the thing, and also doing controlled detonation and explosion wherever is required. And we have already cautioned by doing miking in all the areas within the affected areas to not to touch or try to play with these things. If something is noticed, immediately it should be brought to the notice of the local police station, district officials and other. And then we are communicating back to the army establishment here, and then they are taking necessary measures for that. So thank you everyone, and we will keep meeting right now for relief and rescue, and maybe after some time about the normalization of the life and other interventions which the government is making. Thank you.